हेलो फ्रेंड्स, सीमैट एग्जाम की डेट भी फाइनल हो चुकी है. सो लेट अस प्रिपेयर समथिंग ऑन द रीजनिंग सेक्शन ऑफ सीमैट एग्जामिनेशन. सो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु by Gaurav Gupta. Now in this session I'll be discussing the concept and the questions based on clocks. Clocks is a very important topic, and invariably every year you can see at least one or two questions coming from clocks, right? So I decided to talk about the entire concept of clocks, some of the ways in which you can save your time. कोई क्वेश्चन अगर लेंथी मेथड से आपको समझ में आता है तो मैं शायद उसका एक शॉर्टकट मेथड और या फिर कोई एक फॉर्मूला बना के दे दूंगा, so that you will be able to do that question in less than 30 seconds in the examination. Okay, so let's have a look at the entire concept of clocks and the questions related with that. Now to start with, we need to understand what is the speed of minute hand and hour hand. ठीक है. सो दो हैंड्स हमें कंसिडर करने होते हैं. क्लॉक में तीन हैंड्स होते हैं, तीन सुइयां होती हैं जिसको बोल सकते हैं. ठीक है. सो वी कॉल देम हैंड्स. सो आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड. सो सेकंड हैंड को कंसिडर नहीं करना होता, सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड को कंसिडर करना होता है. तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो आवर हैंड और मिनट हैंड को कंसिडर करके ही आते हैं. नाउ क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. There may be variety of questions which may ask you to find out the angle between the hands, or they will give you the angle and they will ask you to find out the exact time at that particular angle. Okay, so बहुत सारे questions बन सकते हैं, but to start with the basics you need to know the speed of minute hand and hour hand. अब यहाँ पे स्पीड मीटर्स या किलोमीटर्स पर सेकंड में ऐसे तो नहीं होगी, since the clocks, the hands of the clocks are rotating. Okay, so the speed will be in terms of degrees per minute. Okay, so हम find out करेंगे कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करती है, सिमिलरली 1 मिनट में आवर हैंड कितना एंगल कवर करती है. सो दिस इज प्योरली लॉजिक. अगर कोई भी एक क्लॉक कंसिडर करो, लाइक एज यू कैन सी दैट इज ड्रॉन ऑन योर स्क्रीन. सो सपोज करो कि मिनट हैंड अभी 12 की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ, राइट? सो मिनट हैंड कैन कंप्लीट वन एंटायर राउंड इन हाउ मेनी मिनट्स? ओके, सो वी नो दैट एग्जैक्टली 1 आवर में मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड फुल कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी. ओके, सो आई कैन से दैट मिनट हैंड कैन गो अराउंड द एंटायर राउंड इन एग्जैक्टली 1 आवर. सो 1 आवर में कितना एंगल कवर करेगी? 360 डिग्रीज. Now 1 hour का मतलब क्या होता है? 60 minutes. So 60 minutes में it will cover 360 degrees. So 1 minute पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. 60 minutes में 360 कवर करती है, तो 1 minute में कितना कवर करेगी? 360 divided by 60, that is 6 degrees. Okay, so बोल सकते हैं कि speed of minute hand will be 6 degrees per minute. Speed of minute hand will be 6 degrees per minute, or you can say that the angle covered by minute hand in 1 minute will be equal to 6 degrees. In the similar manner, I will calculate the speed of hour hand. Okay, so I'll calculate the speed of hour hand in degrees per minute, exactly same way में. So hour hand की अगर हम बात करते हैं, so hour hand एक complete round कितने टाइम में कवर करेगी? सो अगर इस तरीके की क्लॉक है हमारे पास, सो 12 आवर्स लगेंगे. इन 12 आवर्स आवर हैंड विल कंप्लीट 360 डिग्री. ओके, सो 1 आवर में कितना कवर करेगी? 360 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 30 डिग्रीज. 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स. सो इन 60 मिनट्स इट विल कवर 30 डिग्रीज. तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 30 divided by 60, that is half a degree. Okay, so you can say that the speed of our hand will be half degrees per minute. All right, so in 1 minute, minute hand will cover 6 degrees. Its speed will become 6 degrees per minute. In 1 minute, our hand will cover half degrees and its speed will become half degrees per minute. Okay, now the first few types of questions that you need to understand, which are based on the angles between the hands. Okay, now you can solve these questions, you can save
a lot of time in solving these questions by using direct formulas. Okay, so direct formula देखते हैं, so we call them the clock formulas. So formulas को समझते हैं क्या है ये formulae, and then I'll show you how to apply these formulas. Okay, now the first formula, second formula दोनों similar लग रहे हैं अगर आप देखोगे. Okay, so दोनों अलग अलग situations में use होते हैं just to avoid the negative sign, just to get the final correct answer in one go, right? एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं हो तो इसलिए मैंने क्या किया, दो अलग अलग फॉर्मूले बना दिए हैं. देखने में दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, नाउ लेट्स से आपको एक टाइम गिवन है, कोई भी टाइम लगा लेते हैं, 3:20 PM. ओके, सो द टाइम इज 3:20 PM. ओके, नाउ 3:20 PM है, सो आप एक क्लॉक ड्रॉ करके मिनट हैंड एंड आवर हैंड की रफ पोजीशंस प्लॉट कर सकते हो बहुत इजीली, राइट? नाउ अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करता हूं 12 o'clock से, फाइन. अगर आवर हैंड मिनट हैंड से पहले आ रहा है, इफ आवर हैंड इज बिफोर द मिनट हैंड, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. इन केस आवर हैंड इज आफ्टर द मिनट हैंड, then we will use the second formula. Okay, all right, so 3:20, अगर मैं 3:20 को देखता हूं, I'll draw a clock. So 3:20 approximately our hand will be somewhere here and minute hand definitely उससे आगे होगा, right? So in this case our hand is before the minute hand, right? So I will use the first formula. In other case I will use the second formula when minute hand is before the hour hand. I'll show you practically how it will be done in the questions. Okay, so let's quickly have a look at the questions. Two formulas we have in front of you. Okay, so we'll see which formula to be used in what scenario. So first question, or type 1 of the questions, in which we'll have to find out the angle between minute hand and hour hand. टाइम गिवन है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक at 20 minutes past 2 o'clock. Now 20 minutes past 2 o'clock. Okay, so let me quickly draw a circle. एक सर्कल इंसर्ट कर लेते हैं. Okay, so let's say this is the clock which we are talking about. Now we have to find out the angle between the hands at 20 minutes past 2 o'clock. So that means 2:20 AM or PM does not matter. 2:20 पे एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, सो 2:20 रफ पोजीशन क्या होगा, आवर हैंड विल बी समवेयर बिटवीन 2 and 3 o'clock. सो आवर हैंड यहाँ पे होगा एंड मिनट हैंड 4 पे होगा एग्जैक्टली, राइट? सो दिस टाइम इज 2:20. ओके, now in this case our hand is before the minute hand, right? So if I'll go back to the previous sheet, our hand is before the minute hand. I will use the first formula. मैं first formula use करूंगा. First formula क्या है? It is theta is equal to 11/2m minus 30h. Okay, now here theta is the angle between the hands, m is the number of minutes and h is the number of hours. Okay, now time given है मुझे 2:20, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 and m का वैल्यू 20. I'll substitute these values in the formula and we'll get the answer very easily. So 11/2 multiplied by 20 minus 30 multiplied by 2, ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. now simplify करेंगे, so it will be 110 minus 60 and the answer comes out to be 50 degrees. So at 2:20 the angle between the hands will be 50 degrees. Okay, simple as that. Let's look at one more example using the same formula. What is the angle between the hands of the clock at 40 minutes past 7 o'clock? Now 40 minutes past 7 o'clock, right? So again एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल इंसर्ट कर देते हैं and let's roughly plot 40 minutes past 7 o'clock. That means 7:40. Okay, now 7:40 is the time, so our hand will be somewhere between 7 and 8 o'clock. Okay, so our hand यहाँ पे होगा,
minutes it's 40, so minute hand will be exactly at 8, right? I have taken the close examples so that you will understand कौन सा वाला hand पहले आ रहा है, कौन सा वाला hand बाद में आ रहा है. Okay, so 740 roughly ये चीज होगी. Okay, so now in this case again our hand is before minute hand, so formula कौन सा apply होगा? Theta is equal to 11 by 2 m minus 30 h. So m का value 40, so 11 by 2 multiplied by 40 minus 30 into 7. Simplify this value. 220 minus 210, the value comes out to be 10 degrees. So the angle between the hour hand and minute hand is equal to 10 degrees at 740. Okay, right? So these are the first two examples in which you are given the time and you will have to find out the angle. Let's look at the second type in which the question is completely opposite. तो हमें एंगल गिवन होगा एंड एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करना होगा. टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज गिवन. लुक एट एग्जांपल नंबर 3. इस एग्जांपल को देखो. So it says that at what time between 5 o'clock and 6 o'clock is the angle between the hands of the clock is 50 degrees. So time का range दिया हुआ है. Time is between 5 o'clock and 6 o'clock and the angle between the hands of the clock I need it to be 50 degrees. Okay. Now you have to be very careful in this. Now the time is somewhere between 5 and 6 o'clock. तो our hand तो 5 और 6 o'clock के बीच में ही होगा. Let's say somewhere here. Okay. Now the angle between our hand and minute hand should be 50 degrees. But मुझे ये नहीं बोला हुआ कि our hand पहले आना चाहिए या minute hand पहले आना चाहिए. So we will have to consider both the scenarios. दो cases consider करने पड़ेंगे. Case number 1, when minute hand is before the hour hand. Case number 2, when minute hand is after the hour hand. Okay, as I have drawn. Right? So there can be two time instances between 5 and 6 o'clock when the angle between the hands is 50 degrees. हमें दोनों आंसर कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ठीक है? So the first scenario, जब minute hand पहले है, when minute hand is before our hand, so formula कौन सा यूज होगा? Theta is equal to 30h minus 11 by 2m. जो सेकेंड फॉर्मूला था फॉर्मूला शीट पे, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा. राइट? अब यहां पे थीटा का वैल्यू गिवन है 50 डिग्रीज, सो मैं साइड में लिख देता हूं. सो वी आर गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्रीज एंड एच का भी वैल्यू गिवन है. सो टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम इज बिटवीन 5 एंड 6 o'clock. सो टाइम कैसे होगा? इट विल बी 5 hours and some minutes. Any time which is between 5 and 6 o'clock वो कैसे लिखेंगे हम? 5 hours and some minutes. So that means R का वैल्यू तो गिवन है, it is 5 and हमें minutes का वैल्यू exactly कैलकुलेट करना है. ठीक है? फॉर्मूले में थीटा गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो 50 and h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, so 3 multiply 5 minus 11 by 2m. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको and m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. So m will be equal to 150 minus 50 is 100. 100 into 2, 200 upon 11. You can convert it in mixed fractions, leave it as it is, convert it in decimals. It's totally up to you and it depends on options as well. ठीक है? अब ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं? जनरली ऑप्शंस जो गिवन होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होते हैं. सो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं. सो 11 then 20 upon 11 is 1, 9 बचा 8, so 18 2 by 11 will be the correct answer. So the answer will be like 18 2 by 11 minutes after 5 o'clock the angle will become 50 degrees. Okay, अब ये तो हो गया first case. I need to find out the second case as well when minute hand is after the hour hand. अब वो कैसे करेंगे? The other formula, theta is equal to 11 by 2m minus 30h. Substitute the same values. Theta as 50 is equal to 11 by 2m minus 30 into h का value कितना है? 5. So from here you can calculate the other value of m. So it will be 200 multiplied to 400 upon 11. All right. So 400 upon 11 again इसको mixed fraction में change कर लेते हैं. So 11
3, 7, 6, 4. So 36 4 by 11 will be the correct answer for this one. Okay. So like I told you that the answer, this question will have two answers. One is when minute hand is before and the other one is when minute hand is after the hour hand. Alright, so that was example number 3. We will solve plenty of questions so that you will not have any confusion in your mind. Okay, so दोनों options हो सकते हैं. So अब एग्जाम में ऑप्शंस किस तरीके से होंगे? So they will have option A as this one and option B as this one and option C होगा, then option D में बोलेंगे both option A and option B. Fine. So keep it in mind. This type of questions will have two answers. Let's move on and look at next example. Now, next example, example number 4. Read it through. So it says that at what time between 5 and 6 o'clock is the angle between the two hands of the clock 30 degrees. Okay. So 30 degrees का angle पूछा हुआ है between 5 and 6 o'clock again. Okay. So again there will be two instances. No confusion. Angle is 30 degrees, the value of h is 5. We will just substitute the values and find out the answer. Okay, so answer find out karte hain jaldi se. 30h minus 11 by 2m, the first formula. Okay, so formula mein values put karo. 30 is equal to 30 into h, 30 into 5 is 150 minus 11 by 2m. So from here the value of m will be equal to 150 minus 30, that is 120 into 2, 240 upon 11. Converted in mixed fractions, divided by 11, 20. So 22 to 1, 9. So 21, 9 by 11 is the first answer. Second answer, the second formula, theta is equal to 11 by 2m minus 30h. Okay, so theta is 30 degrees, 11 by 2m, m is what we have to find out. 30 multiplied by h is 150. So from here, the value of m comes out to be 360 upon 11. Alright, so 360 upon 11, again mixed fraction में convert कर लेते हैं. So 3 to 32, 8 by 11 is your answer. Okay, so again this question will have two answers, 21 9 by 11 and 32 8 by 11. Okay, and you will have to mark a suitable answer in the examination. Let's go to the next question, the next type. Okay, so slightly different. At what time between 2 o'clock and 3 o'clock will two hands of the clock coincide? अब coincide का मतलब क्या है? They are overlapping each other. That means the angle between these hands is 0 degrees. 0 degree का angle है, right? अब angle 0 degree है, so which formula to be used? When minute hand is before or when minute hand is after? Both formulas can be used. So you can use any of the formulas. Obviously, you will get only one instance because minute hand and hour hand are coinciding. They are overlapping each other. They are making an angle of 0 degree. This will happen only once, right? So कोई भी formula use कर लो, does not matter at all. Theta is equal to 11 by 2m minus 30h. h का value 2 हो जाएगा and theta will be equal to 0. I'll write it. Theta is equal to 0 degrees and the value of h will be 2 because time is between 2 o'clock and 3 o'clock. Okay, so values quickly substitute करते हैं. 0 is equal to 11 by 2m minus 30 multiplied by 2. So the value of m comes out to be 120 upon 11 and that is 10 by 11. So 10 by 11 minutes after 2 o'clock, the hands of the clock will coincide each other. Okay, so that was pretty simple, straightforward example. Understand, remember that the hands of the clock will coincide each other only once between any two consecutive time locations. Okay, now we'll also come on and discuss how many times will it happen in 12 hours or 24 hours. We'll have a look at that. Okay, now let's take one more example. At what time between
10 o'clock and 11 o'clock, the two hands of the clock will be in opposite direction. अब मेरे को directions opposite चाहिए. Now opposite direction means they are making an angle of 180 degrees. ठीक है, 180 का एंगल है. So सबसे पहले देखते हैं 10 and 11 o'clock पे R hand कहां पे होगा. So R hand will be between 10 and 11. So R hand will be somewhere here like this. Okay. Now I need both the hands to be opposite to each other. तो मिनट हैंड अब इसके ऑपोजिट बना देते हैं. मिनट हैंड विल बी समवेयर लाइक दिस. ओके, मिनट हैंड यहां पे होगा एंड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. मैंने रफली प्लॉट कर लिया. नाउ वील हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, द एग्जैक्ट टाइम एट विच दिस विल हैपन. So again, if I start from 12, move in clockwise direction. So minute hand पहले है, R hand बाद में आएगा. So formula कौन सा यूज होगा? Theta is equal to 30h minus 11 by 2m. So we'll be using this formula. Basically formula में क्या होगा, जो भी फिगर में है फॉर्मूले में उसका उल्टा होगा. फिगर में मिनट हैंड पहले आ रहा है, फॉर्मूले में m बाद में आएगा. याद करने का तरीका बता रहा हूं. ठीक है. Now here theta is equal to 180 degrees and the value of h that will substitute will be equal to 10. Okay, so let's substitute these two values in the formula. 180 is equal to 30 into h, 30 into 10 minus 11 by 2m. So from here the value of m should be 300 minus 180 is 120 multiplied by 2, that is 240 upon 11. ये वाला स्टेप लिखने में like you can take one extra step to write this value. मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, प्रैक्टिस है मुझे, बट आप एक स्टेप एक्स्ट्रा ले सकते हो, कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली परफॉर्म करनी है. ओके, सो 240 अपॉन 11 इसको कन्वर्ट करते हैं 21/9 by 11. So 21/9 by 11 minutes after 10 o'clock, the angle between the hands will be 180 degrees, or you can say that the hands will be opposite to each other. Okay. Now let's move on and look at one more thing. So what you can do is you can like, if you're liking this session, please do press the like button, share and subscribe my channel. All right, fine. Okay, now one last thing that I will tell you is the number of times the minute hand and hour hand will be at 0 degrees with each other, or they will make an angle of 180 degrees with each other, or they will make an angle of 90 degrees with each other. Basically the frequency of 0 degrees, 90 degrees and 180 degrees, right? So these are the three things that may be directly asked as a question. So in 12 consecutive hours, minute hand and hour hand will coincide each other a total of 11 times. Similarly, they will be at an angle of 180 degrees 11 times. All right. Now 90 degrees का exactly double हो जाएगा इसका. It is 22 times, because generally 90 degree का angle एक like 1 hour में 2 बार होता है. There are some exceptions like at 3 o'clock and 9 o'clock, right? So this is the total number of times 0 degree, 90 degree and 180 degree will be formed in 12 consecutive hours. Similarly in 24 hours इसका double हो जाएगा, बस ये चीज याद रखनी है, 22 times, 44 times and 22 times. ओके, इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये चीज सिर्फ याद रखो. एंड कभी कभी ऐसा लाइक रेयर इंस्टेंसेस में हुआ है कि डायरेक्टली ये नंबर्स यूज हो सकते हैं. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ क्लॉक्स विद सम एग्जांपल्स ऑन forming or finding the angle between the hands or finding the time at which any particular angle is being formed. I hope you would have liked this session. Please do press like button, share this session with your friends and subscribe my channel. Keep watching this channel, keep learning from these videos. All the very best to all of you.